Hello friends, welcome you all in Learning Tour classes. Friends, this is the current affairs video series, and in this video we will discuss the important current affairs of July 2024. This video are useful for the state PCS, RO, ARO, SSC and other examination. इससे पहले लर्निंग टूर क्लासेस ने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन पे वीडियोस बनाए हैं। वीडियोस में डिटेल्ड सॉल्यूशन है उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। You can watch those video through the links provided in the comments. उन वीडियोस के PDF, PPT मटेरियल डाउनलोड करने के लिए आप अपने ईमेल आईडी को कमेंट में पोस्ट करें। एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज लर्निंग टूर क्लासेस। आगे बढ़ते हैं। पहले हम गवर्नेंस और गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इंडिया इंप्लीमेंट्स न्यू लॉज रिप्लेसेस कॉलोनियल एरा कोड्स। ये लॉस कब से आएंगे? जुलाई 1, 2024। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, this will replace CRPC. This will replace CRPC, Criminal Procedure Code. सेकेंड, भारतीय न्याय संहिता BNS, ये किसको रिप्लेस करेगा? इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करेगा। इस IPC में, भारतीय न्याय संहिता में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो किए गए हैं वो हम इधर डिस्कस कर लेंगे। मर्डर सेक्शन अभी BNS में वो 103 हो गया है। अर्लियर IPC में दिस वाज 302 था। अटेम्प्ट टू मर्डर 109 BNS में हो गया है। अर्लियर इट वाज 307। रेप सेक्शन 63 BNS में है, जबकि IPC में दिस वाज 375। चीटिंग सेक्शन 318 BNS में हो गया है। भारतीय न्याय संहिता में ये 318 हो गया है, जबकि IPC में दिस वाज 420, 420 थी IPC में, बट दैट इज रिप्लेस्ड विथ 318 इन BNS। थर्ड वन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम विल रिप्लेस इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, विल मूव फर्दर। Digital Bharat Nidhi. DoT has released a draft rule for the Digital Bharat Nidhi on July 4th. The goal is to improve the effort to connect the people to the internet, especially rural, remote and poor urban areas. Next one, Jharkhand mica mines declared child labor free. Jharkhand mica mine को child labor free declare कर दिया गया है। किसने डिक्लेयर किया है? National Commission for Protection of Child Rights. They have recently said that there is no child labor in the mica mines of Jharkhand. Next one, Union Home Minister, गृह मंत्री अमित शाह ने एक हेल्पलाइन लॉन्च किया है, that is termed as मानस। किसके लिए है? This is first ever toll free national helpline for narcotics related issues. मानस का फुल फॉर्म क्या है? मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र। इसका लोगो कुछ इस टाइप से है। Next one, Madhya Pradesh is the best state in the Prime Minister Swanidhi scheme. So Madhya Pradesh is designated as the best state under best performing state category for Prime Minister Swanidhi scheme. अब Prime Minister Swanidhi scheme क्या है? This Swanidhi scheme launched in 2020 and this gives the loan up to 50,000 to the street vendors in the cities with no collateral. सो ये किसके लिए था? स्वनिधि योजना किसके लिए थी? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये स्वनिधि योजना थी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू चेंज द नेम्स ऑफ द राष्ट्रपति भवन हॉल ऑन जुलाई 25, 2024। अब दरबार हॉल क्या बन गया है? गणतंत्र मंडप। दरबार हॉल का नाम हो गया है गणतंत्र मंडप। अशोक हॉल दैट बिकेम अशोक मंडप। सो आपको ये नाम जो बदला हुआ है उसको ध्यान में रखना है। नाउ इकोनॉमिक्स एंड प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। प्रोजेक्ट नेक्सस, दिस इज रिसेंटली जॉइंड बाय द RBI एंड प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? दिस इज अ वर्ल्ड वाइड एफर्ट टू मेक इट इजियर फॉर पीपल टू सेंड मनी इंस्टेंटली अक्रॉस द बॉर्डर। सो इसमें क्या करेंगे? सारे जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, दे विल इंटीग्रेट द फास्ट पेमेंट सिस्टम। हमारे यहाँ का UPI है,
in different country, they will integrate this fast payment system so that it become easier for people to send money instantly across the border. Next one, the Thane Borivali Twin Tunnel. थाने बोरीवली ट्विन टनल, ये एक प्रोजेक्ट है ट्विन टनल का, एंड दिस विल बी दी इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 16,600 करोड़. ये बनेगा भी, एंड दिस विल कनेक्ट थाने एंड बोरीवली थ्रू अ डायरेक्ट सबवे लाइन दैट रन्स फॉर 11.8 किलोमीटर. सो हमें क्या क्या इसमें याद रखना है? एक तो नाम याद रखना है, नाम से ही हमें कनेक्शन पता चल जाएगा कि थाने से बोरीवली कनेक्ट होगा. एंड लेंथ याद रखनी है, इट विल बी ऑफ 11.8 किलोमीटर. नाउ बजट, अभी रिसेंट जो बजट आया है उसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर है दैट इज अराउंड 48.21 lakhs. बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में डिफाइन किया गया है, एंड बजट एज अ टर्म यूज नहीं किया गया है, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Annual financial statement. Now, abhi when we go to the receiving of the government in the budget, so we can see that a significant amount we are getting through the borrowing and other liabilities, that is around 27%. After that, it is income tax. Income tax का कितना रोल है? 19% जो बजट है टोटल इनकम टैक्स का उसमें योगदान है. उसके बाद हमारा आता है 80% जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से कलेक्ट हुआ है, 17% हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स से कलेक्ट हुआ है. सो दीज आर मेजर सोर्सेज थ्रू विच वी आर गेटिंग दी मनी. नाउ एक्सपेंडिचर जो हमारा मेनली जो ब्रॉडली कहाँ पे पैसा खर्च होने जा रहा है, एक तो स्टेट शेयर्स इन टैक्सेस, वो एक बहुत बड़ा भाग है, दैट इज अराउंड 21%, वो स्टेट शेयर्स में चला जाएगा. फिर इंटरेस्ट पेमेंट, जो हमने लोन वगैरह ले रखा है, गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है, बारो किया है, जो अदर लाइबिलिटीज है, वो उससे हमें उसका इंटरेस्ट जो पे करना है, दैट इज अराउंड 19% बजट का उसमें चला जाएगा. देन उसके बाद आता है सेक्टर स्कीम, 16% उसमें जाएगा. डिफेंस में हमने अलोकेट किया है 8% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर. सो लाइक दैट वी हैव दिस, I mean this categorization of expenditure. Now we'll move to next one. अब देखेंगे इंटरनेशनल न्यूज रिलेशन और ट्रीटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स. तीसरा ट्रीटी ये भी हुआ नहीं है, इट वाज प्लान्ड इन 2011. तीसरा ट्रीटी किसके बीच में प्लान था? दैट वाज अमंग इंडिया एंड बांग्लादेश. And according to the plan, it was like India would get 42.5% of water and Bangladesh would get 37.5% of Tista river water. Now Tista river, you can see that then go through the West Bengal, then Bangladesh. ये Tista river, this is the Tista river. So ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद Tista river and ब्रह्मपुत्र जब मिल जाते हैं उसके बाद इसका नाम हो जाता है जमुना रिवर हो जाता है बांग्लादेश में. Tista river originates from Khangse glacier and meet Brahmaputra to form Jamuna river. Next one, कोरियन बलून वॉर. ये वार बहुत इंटरेस्टिंग है. साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच एक बलून फाइट चल रही है, जिसमें साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया दे आर सेंडिंग ट्रेसेस they are sending through the balloon. So recently North Korea has sent 250 balloons full of trash into South Korea. So here you can see that इसमें कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है. It's just like balloon war किसके बीच में चल रहा है? It's between North Korea and South Korea. Now North Korea and South Korea, इनके बीच जो बाउंड्री लाइन है that is called 38 degree parallel, because 38 degree latitude almost passing through the boundary of the South Korea and North Korea. Now next one, 16th nomadic elephant exercise
that will held from July 3 to July 16. Nomadic elephant exercise is between Indian Army and Mongolian Army. Indian Army and Mongolian Army. Location अभी वाला जो होगा exercise that will be in Umurai, Meghalaya. Umurai, Meghalaya. So location we have to remember, and we have to remember this joint military exercise between whom? It is between Indian Army and Mongolian Army. 30th Maitri military exercise, that is between India and Thailand. Maitri, that is between India and Thailand. Location, this will carried out in Tak province of Thailand. Tak province of Thailand. Next one, the recent NATO summit held in Washington included the Indo-Pacific Four. ये इंपॉर्टेंट है, नाटो में ये जो इंडो पैसिफिक फोर वो क्या है जो भी पार्ट लिए हैं, दे आर जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. Now about NATO or the North Atlantic Treaty Organization established on April 4, 1949. It originally included 12 countries and has since grown to 30 members. अभी कितने हो गए इसमें? 30 members हो. हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? ब्रसेल, बेल्जियम. Bangladesh joins Colombo Security Conclave as a fifth member. Colombo Security Conclave क्या है? Is a group of regional security experts who work together to solve naval security problem in Indian Ocean. इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? Formed in 2020. इसके मेंबर कौन कौन से हैं? That you have to remember. They are India, Sri Lanka, Maldives, Mauritius, and now it's Bangladesh. Laos introduced a special set of commemorative stamp featuring Lord Rama and Lord Buddha to highlight the cultural ties between Laos and India. You can see here, this is the stamp introduced by Laos and has a figure of Lord Rama, and this is having the figure of Lord Buddha. So this is to highlight the cultural ties between Laos and India. Next one. Now we will discuss current affairs which are related with science and technology as well as with environment. Indian military communication technology gets better on its own in a historic move. वो move क्या है? The Indian Army recently got its first 4G mobile base station in India, and this is built by Singletron, and that is in Bangalore. So what you have to remember? You have to remember the location. 4G mobile base station Indian Army का कहाँ पे है? That is in Bangalore. What is SEBEX-2? SEBEX-2 is the most powerful non-nuclear explosive developed by Indian Navy. Indian Navy ने develop किया है एक non-nuclear explosive, and that is the SEBEX-2. SEBEX-2 is made from high melting explosive. This is made of high melting explosive, which means it can greatly increase the destructive power of many weapons like bombs, gun, shell, warhead without adding any extra weight. So high melting explosive from the SEBEX-2. Question आएगा SEBEX-2 क्या है? And that is most powerful non-nuclear explosive and developed by Indian Navy. Next one, Aditya L1 completes first orbit at Sun Earth L1 point. Aditya L1 क्या है? इसरो का सन मिशन है. So this is launched on September 2, 2023 and reached its largest halo orbit around L1 on January 6, 2024. Now after reaching there, it completes its first orbit around L1. ये इसका orbital, ये इसकी orbit है, and it has completed its first sorry. So in this orbit, it has revolved and completed its first orbit. So what is L1? L1 is a point where spacecraft orbit motion is balanced by the pull of gravity. Lagrange point इसको बोलते हैं. और L1 पॉइंट्स पे जाने के बाद सन और अर्थ का जो ग्रेविटी पुल है इस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट पे वो एक बैलेंस हो जाएगा. इसका मोशन जो है ग्रेविटी पुल के कारण वहां पे एक बैलेंस्ड मोशन हमें दिखेगा. यू कैन से दैट देयर इज अ इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल अट्रैक्शन फ्रॉम द सन एज वेल एज फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटी पुल. विल मूव टू नेक्स्ट वन. जंक डीएनए. जंक डीएनए क्या है? दैट इज नॉन कोडिंग डीएनए.
that make up about 98% of our genome. Why it's called junk DNA? Because it doesn't code for protein. It doesn't code for protein. Why junk DNA is in use? Because new research from Garvan Institute of Medical Research, they have shown that non-coding regions of DNA may contain cancer-causing genes. So this was all about junk DNA. Next one, robot suicide. A robot employed by the Gumi City Council in South Korea went defunct after falling down a flight of stairs. The nickname of robot was robot supervisor. So it started, it defunct, the robot defunct, this robot, and that's what came into news as a suicide of the robot, first suicide of the robot. So it defunct by its own, that's why they are calling that it's the first suicide of the robot. There may be some other issues about defunctioning of the robot, but people are calling as a suicide of the robot. So what you have to remember? You have to remember where the robot was employed. It was employed in Gumi City Council of South Korea. And what was the nickname of robot that made suicide? That is robot supervisor. Next one, Lokpath app. Mohan Yadav, the Chief Minister of Madhya Pradesh, recently launched the Lokpath mobile app. And this mobile app, the goal of this mobile app is to report the road problems faced by the citizen, and they are claiming that after reporting within 7 days, the road problem will be fixed by the concerned authorities. Next one, India to ratify High Sea Treaty. By 2030, the UN High Sea Treaty, which was signed in 2023, plans to protect 30% of world seas. So UN High Sea Treaty क्या है? It came into 2023, and by 2030, UN High Sea Treaty, they are claiming that they will protect 30% of world sea water. It sets up marine protects areas outside the national seas that cover about 2/3 of the ocean. So जो protected area, जैसे हमारा लैंड में टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया होता है, नेशनल पार्क होते हैं, सेंचुरीज होती हैं, सो उसी लाइन पे सी प्रोटेक्टेड एरिया फॉर्म किए जाएंगे, एंड वो प्रोटेक्टेड एरिया कहाँ पे होंगे? दैट विल बी आउटसाइड ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल सी बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज, और वहां के लगभग 30% एरिया को प्रोटेक्ट करने का यहाँ पे प्लान है. नेक्स्ट वन, नेचर जर्नल, they have said that Omega Centauri star cluster has an intermediate mass black hole. Omega Centauri एक स्टार क्लस्टर है मिल्की वे गैलेक्सी में, एंड वहां पे एक ब्लैक होल दैट हैज बीन प्रेडिक्टेड. ब्लैक होल कैसे फॉर्म होता है? यू कैन सी हियर, दिस इज द स्टेलर नेबुला. मैसिव स्टार जो होते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 टाइम्स सन मास, जो हमारा सन है उससे ग्रेटर, 1.5 टाइम्स से ग्रेटर, उस सन के मास के 1.5 टाइम्स से ज्यादा जो मास वाले स्टार होते हैं, दे विल गो इनटू फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स. लाइक they will first turn to massive, they will first turn to red supergiant, then will go under supernova explosion, and some may form neutron star and some may form the black holes. The small stars like sun, they will go to a red giant and then will form planetary nebula and will become the white dwarf star like that. Next one, NASA's SAPIA. This is the project of NASA, Crew Health and Performance Exploration Analog Project. So what you have to remember, the full form of SAPIA, that is Crew Health Performance Exploration Analog Project. SAPIA क्या है? SAPIA is a series of analog missions that will simulate year-long stay on the surface of the Mars. Each mission will consist of 4 crew members living in the Mars Dune Alpha, an isolated 1700 square foot habitat. So under NASA's SAPIA mission, एक Mars Dune Alpha, this is the name of the isolated habitat which will simulate the environment of the Mars, जहाँ पे 4 crew member जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, ये लॉन्ग स्टे करेंगे, एंड दे विल
perform the activities which they are meant to perform at the Mars. So this is kind of Mars simulation activities. This is the project of NASA, and the name of the project is NASA Sapien. So you have to remember Sapien as well as you have to remember the Mars Dune Alpha. What is Mars Dune Alpha? This is the isolated habitat which will simulate the Mars surface. Next one, Niti Aayog launches hackathon for zero emission truck. जीरो इमिशन ट्रक हैकाथॉन किसने लॉन्च किया है? लॉन्च्ड बाय नीति आयोग. जीरो इमिशन ट्रक जो व्हीकल है, आई मीन ट्रक्स हैं, उसके इमिशन को कैसे बैलेंस किया जाए, आई मीन कैसे रिड्यूस करके जीरो इमिशन ट्रक तक पहुंचाया जाए. सो ऐसे कुछ आइडियाज इस हैकाथॉन में आई मीन पार्टिसिपेंट के द्वारा दिए जाएंगे और उनका आई मीन विश्लेषण होगा एंड दे विल बी अवार्डेड. नेक्स्ट वन, न्यू हाई एफिकेसी मलेरिया वैक्सीन लॉन्च्ड इन कोट द आइवरी. सो कोट द आइवरी में न्यू हाई एफिकेसी की एक मलेरिया वैक्सीन लॉन्च की गई है एंड द नेम ऑफ द वैक्सीन इज R21 और मैट्रिक्स एम वैक्सीन. So you have to remember what is this R21 matrix M vaccine. That is the high efficacy malaria vaccine. High efficacy malaria vaccine launched in Cote d'Ivoire. Next one, China has shown off a revolutionary passenger train made of only carbon fiber. So passenger train made by only carbon fiber. ये किस कंट्री ने शो ऑफ किया है? It is China. So it's kind of show off as of now. So they have demonstrated this passenger train made of only carbon fiber. Next one, we will discuss current affairs related to awards, personal news, book, sports, and other miscellaneous current affair topics. T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हम सबने देखा. That has been organized in USA and West Indies. विनर कौन था? विनर was India. रनर साउथ अफ्रीका. फाइनल वेन्यू, so that you have to remember, Barbados, West Indies. मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैच में it was Virat Kohli, and man of the tournament it was Jasprit Bumrah. So these facts you have to remember. Sujata Sonic is the first woman in Maharashtra history to be named Chief Secretary. Since she is the first woman, so we have to remember the name Sujata Sonic. Antonio Costa, who used to be the Prime Minister of Portugal, has been chosen to be the next President of European Council. European Council का next President कौन है? That is Antonio Costa. So this name we have to remember. Oran Nolson, ये कौन है? He is a teenager from United Kingdom. इनको क्यों याद किया जा रहा है? Because he is the first person in the world to receive brain implant designed to control epileptic seizures. Epileptic seizures में क्या होता है? Brain हैंग हो जाता है काम करना, I mean थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है, सीजर हो जाता है, I mean epileptic जो ये न्यूरॉन्स है, they ceases to function. So ओरान नोल्सन पे क्या हुआ कि उनको एक ब्रेन इम्प्लांट किया गया उनके ऊपर, एंड दैट इज डिजाइन टू कंट्रोल द एपिलेप्टिकल सीजर्स. नाउ रैचल रीव्स, ये कौन है? शी इज द फर्स्ट ब्रिटेन्स वुमन फाइनेंस मिनिस्टर. फर्स्ट है इसलिए वी आर रिमेम्बरिंग हर. यूके इलेक्शन हुआ 2024 में, कितनी सीट्स थी? 650 सीट्स थी. लेबर पार्टी got 411 seats. Conservative Party led by Rishi Sunak, they have obtained 121 seats, and Labour Party won the election, and its new Prime Minister is Keir Starmer. Keir Starmer is the new Prime Minister. So he is the Keir Starmer, and she is the first woman finance minister, that is Rachel Reeves of Great Britain. Next one, famous Tamil author Shiva Shankari. She has received Dr. C. Narayan Reddy National Literary Award. So इसलिए हम शिवा शंकरी को याद रखेंगे. मसूद पेजेस्कियन, ये नाम भी याद रखना है. ही इज द ईरान्स न्यू प्रेसिडेंट. नेक्स्ट वन, 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, ये किसको दिया गया है? महाराष्ट्र को दिया गया है फॉर बेस्ट स्टेट फॉर फार्मिंग इन 2024. सो व्हाई इट इज गिवन? मेकिंग बिग स्टेप फॉरवर्ड इन न्यू वेज ऑफ फार्मिंग एंड इंप्रूविंग रूरल एरियाज. नेक्स्ट वन, पीएम मोदी अवार्डेड रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर. क्या नाम है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड. सो ये नाम आपको याद रखना है. थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा वियर्ड है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस. द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड. दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम रशिया एंड given to the Prime Minister Narendra Modi recently. India ranks 5th in global generative AI innovations.
So India is fifth, and who are other winners? They are China, US, Republic of Korea, Japan, then it's India. Gagan Naran named chef de mission for Paris 2024 Olympics. So he is named as chef de mission. Why? What is the role of chef de mission? He is in charge of Indian team. He is in charge of Indian team at Paris Olympic 2024. The Department of Promotion and Industry and Internal Trade (DPIIT) has suggested that the unpopular angel tax on startups should be gotten rid of. So ये angel tax क्या है? Angel tax is a tax that private companies have to pay on raised money that is more than their fair market value. Sorry. Angel tax क्या है? अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपनी फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर मनी रेज करती है तो उस मनी पर टैक्स लगेगा एंड दैट इज एंजल टैक्स. नेक्स्ट वन, Nagaland won the Best State in Horticulture Award 2024. So who has got the Best State in Horticulture Award 2024? It is Nagaland. Next one, the Constituent Assembly of India officially accepted the national flag on July 22nd, 1947. So this is something historical. On July 22nd, 1947, India has accepted officially national flag. Our national flag has been accepted on July 22nd, 1947. Next one, according to the Henley Passport Index, Singapore passport is once again became the most popular or most powerful in the world, granting visa free entry to 195 amazing places. So Singapore first place पे है according to Henley Passport Index. India का rank क्या है? India is at 82nd. India is at 82nd. Next one, Abhinav Bindra, the iconic Indian shooter and first individual Olympic gold medalist from India, awarded the Olympic Order. Olympic Order Abhinav Bindra को मिला है. क्यों मिला है? For his significant contribution to Olympic movement. So this much we have to remember. Next one, Neeta Ambani re-elected as International Olympic Committee member. This also we have to remember. Next one, Kargil Vijay Divas, which we celebrate on July 26. Why we celebrate? To remember the brave soldiers who died in the war of 1999 Kargil war. So that's why we celebrate Kargil Vijay Divas. We were victorious in this war, and it's our responsibility, it's our duty to celebrate, to observe this Kargil Vijay Divas and pay our tribute to brave soldiers of our country. The Karadio Moidams in Assam, which are royal burial ground from the Ahom dynasty, were recently named UNESCO World Heritage Site. So you can see here, this is the Karadio Moidams in Assam, and they are the burial grounds, and so this is named as UNESCO World Heritage Site. Japan's Sado gold mines added to UNESCO World Heritage List. So this is Sado gold mine in Japan, that is also added to the UNESCO World Heritage List. Next one, from the sports, from the Olympics, Manu Bakar has won bronze medal in shooting in women's 10-meter air pistol competition. And also Manu Bakar and Sarabjit Singh, they also won bronze medal in mixed 10-meter air pistol of shooting event. Swapnil Kushal, he has won the men's 50-meter rifle 3 position. So he has to perform the shooting event in 3 positions, and he has won the bronze medal as well. So we have got, till now we have got 3 bronze medal. So Manu Bakar, she has won 2 bronze medal in this Paris Olympic 2024. One is individual and one is in a mixed event. Something related to Uttar Pradesh specific current affairs. Uttar Pradesh Nodal Investment Regions for Manufacturing Construction Area Bill Nirman 2024. So this bill will be introduced, and what is aim of this bill? This bill is a part of broader strategy to uplift the state's economy to the $1 trillion mark. So current GDP उत्तर प्रदेश का कितना है? That is around 290 billion USD है यूपी का अभी. So we have to reach
through the Nirman bill, I mean, this is the part of broader strategy, and we are aiming to reach 1000 billion USD or 1 trillion USD we are aiming to reach. So this is the current GDP of Uttar Pradesh in 2023-2024. India's GDP वो कितना है अभी 2023-2024 में, that is 293 lakh crore, or you can say 3.5 trillion USD. That is the India's GDP.